Okay, so hello everyone, good morning, and welcome to this session of RBI circulars, wherein we discuss RBI related circulars. Today we are going to cover the second half of the March circulars. We have 12 to 13 circulars in this particular part, right? So we are going to again discuss them slowly and simply, right? We will try to include everything, whatever we have in the RBI website. Okay. Yes. Good morning, Manish. So let's start with this. Okay. So our first, we can say circular name is Master Direction, RBI, Unique Identifiers in Financial Market Direction. So this is a particular circular which talks about the unique identifiers. The one is LEI and the other one is UTI. LEI is Legal Entity Identification Number. So it's an entity identification number which is being used by the entity. Now this comes UTI. UTI stands for Unique Transaction Identifier. Now this is a transaction identifier. So it is being applied or used for each and every transaction. These are the main two bifurcation. Now what RBI have done in this particular, we can say master direction, they both have different and separate circulars and master directions. So in order to make the rules and regulations simpler to be followed by the regulated entities, RBI said that let's consolidate both the directions. So consolidating both, they have taken out one single master direction. So this is all about your master direction and information related to LEI and UTI. Okay. How they have done this? Under section 45 of W and subsection U, they have issued this master direction. The goal is to make the financial market more transparent, traceable, and safer for them. There are two identity, that is legal entity identifier UTI. The legal entity identifier is of 20-digit unique code. Okay, you will remember it. It is like PAN number for the companies. Like individual use their PAN number in order to enter into the financial market. They also use that PAN number in order to open their bank account. Just it's a very important document. Just like that, LEI is a very important code for a entity to do any kind of transaction or any kind of trade within the company, right? So again, this is 20-digit unique code. UTI is a unique transaction identifier, a unique code for each derivative transaction. It is like a transaction ID. So each transaction deal is being recorded. Okay. So this is what it means, right? To track each specific deal, this is like who is involved, who's the entity is, and then who is being doing that particular transaction, and this is about the track of each and every transactions. Now both the directions are going to be effective immediately. The LEI direction is going to be effective immediately, but if I talk about this particular transaction, that is UTI, it is going to be effective from January 1, 2027. Okay, both the directions are effective differently. One is immediately and another one is January 1, 2027. So there are certain definitions that we need to understand before we start the directions. Okay. So what is central counterparty? The central counterparty is an institution which is an intermediary, right, between the buyer and the seller. We are well aware of this particular terminology. Let's just talk about the electronic trading platform. The electronic trading platform is an electronic system that allows you to make the financial transaction and as defined by the RBI, ETP. Over the counter market is a market which is done
outside the formal exchange. That is, you are not doing transaction in a stock exchange. Instead, you are doing that outside the formal exchange. So that becomes over and over and above, or we can say over the counter, right? Again, parties are directly dealing with each other. There is no counterparty between the seller and the buyer, right? And obviously, they are doing customized agreement, right? Let's just talk about part A, which specifically talks about LEI, entities identifier. Again, this is 20 character code that uniquely identifies the financial transaction. Applicability mandatory for all the over the counter transactions in the government security, money market, forex, derivative under the RBI 1934. So what you need to understand here is this, that it is applicable on over the counter transaction, right? Second is which kind of transaction, for any transaction which is happening for the government security, for the money market, for the forex, and for the derivatives. For all these, you need what? LEI if you want to trade in these particular contracts, right? You as an entity, you need this particular, we can say, identifier. For the forex one, they are specifically saying that if you are dealing with the forex transaction, again that is non-derivative in nature, right? For that, the limit is if you are doing the transaction of more than $1 million, $1 million, okay? If that is the case, then only you need a LEI. Otherwise, you can do the forex which are of lower value. Now, who issues this number? That is also very important for you to understand. It can be issued from, must be obtained from the RBI recognized local operating unit, right? Accredited by the Global LEI Foundation, the one who is giving you such LEI identifier. Non-resident, non-resident without separate legal entity may use their parent management company's LEI. Okay, any non-resident, if they are doing any kind of transaction on behalf of that, in behalf of the company, they can use their company's LEI. Compliance is that all the participant must record and maintain the LEI details. Transactions are barred without a valid active LEI. Entities must keep their LEI updated. So this is very general in nature. You can avoid learning these kind of statement also. The important statement we have already covered it. Okay. Let's just talk about part 2, which is regarding UTI. So we are going to read it like this. We think that this particular line is not important. We are not going to explain it, and you can also avoid learning that particular line as well. Okay. So UTI ensures that each transaction have a unique identification. That stands for UTI. So that we can track and accurately report the financial system about each and every transaction. A unique code is required for every OTC derivative transaction, right? Purpose is to have a standard reporting at a global level. UTI is necessary or assigned to each and every OTC derivative transaction, right? It is global reporting standard to help the regulator and policy maker to track the transactions. Applicability, on which these are going to be applicable, this is important. This is for foreign exchange derivative, interbank dealing and risk management. That means when banks are dealing with each other, right? For that kind of transaction as well, they will be allocating UTI. Rupee interest rate derivative, forward contracts in government securities, credit derivatives, any future RBI direction. So if RBI gives a direction that this particular derivatives and contracts are also going to be a part of this UTI, then we can include that as well. Okay. So we can remove this particular line because as updated, we are going to understand that yes, this is all logical enough. If RBI said it, so we have to include that. Otherwise, we have these 5 ways in which we need to have a transaction with the UTI, right? Let's see, do you have any doubt as of now?
Okay. So as of now, everything is fine, right? Key points. Every covered OTC derivative must have a UTI for proper identification, tracking, and reporting. So now onwards, you will remember that for every kind of OTC, you need what? UTI. So you will remember this key line here. Okay. So UTI have 52 length characteristics. What is the format? The first 20 characters are LEI, that is 20 digit number of the LEI, and then comes your unique transaction code. Combining both, we are coming up with the 52 characters. Okay. It remains valid throughout the transaction cycle. So as transaction expires or transaction is completed, so for recording purpose, that particular transaction record is there with a code. After that, we cannot allocate that particular unique code to another transaction. It is going to be expired or used for that particular transaction only. Responsibility, who will give the transaction code? So they have a waterfall approach. Waterfall means that if this entity is not able to give the code, this entity will give. If this entity is not able to give the code, this entity will give. So this is a waterfall approach. So they have prioritized that who will give first. So first is central counterparty, the intermediary, which is between the buyer and the seller. They will give the code. If they are not giving the code, then trading platform, wherever you are trading, right, in that platform is responsible for you to give the UTI, or mutually agreed counterparty, right? Your counterparty, you are mutually agreeing to have a transaction code. If none, then Clearing Corporation of India Limited, trade repository, they are going to give you the, we can say, you a particular code. So for a cross-border transaction wherein there is a global entity which is being involved in that case, then if a foreign jurisdiction has earlier reporting deadline, use that UTI, because UTI will be given by that particular foreign judiciary as well, or we can say jurisdiction as well, or our domestic jurisdiction as well. But if the reporting deadline is earlier, then you can follow the UTI which is being given by the foreign jurisdiction. So you are allowed to be use the UTI which is being given by the foreign jurisdiction. If not possible, report within 5 Mumbai business days. Temporary UTI is allowed to be finally report. So finally temporary UTI भी use कर सकते हैं if you are getting delayed for reporting the transaction. माइनर चेंजेस के लिए सेम यूटीआई रहेगा, पर अगर कोई मेजर चेंजेस है तो न्यू यूटीआई एलोकेट किया जाएगा. For the compliances, CCIL will issue the operation guidelines and market participants must set up the system to ensure the compliances. ये ऐसी डायरेक्शन हम छोड़ देते हैं. Do not need to remember this. ठीक है. तो with this we are done with the first one. ये वाली थोड़ी ज्यादा पढ़ने वाली थी, ज्यादा समझने वाली नहीं थी, तो एक बार ही पढ़ लेते हैं. क्या था? हमने LEI और UTI के बारे में बात करी. वी टॉक्ड अबाउट 3 डेफिनेशन विच इज वेरी इजी. हमें पता चला LEI 20 कैरेक्टर्स का यूनिक कोड है, वेर एवर UTI इज 52 कैरेक्टर का यूनिक कोड. 52 में से पहले 20 कैरेक्टर आर फ्रॉम द LEI एंड द रेस्ट ओवर इज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन कोड. ठीक है. दोनों की एप्लीकेबिलिटी है, ये आपको याद रखनी है. दैट इज कि यूटीआई किस किस केस में एप्लीकेबल है, वेरी मस्ट एंड वेरी नेसेसरी. जस्ट लाइक दैट LEI कौन कौन सी ट्रांजेक्शन में कर सकता है. जैसे कि हमने फॉरेक्स में देखा, फॉरेक्स में भी उसके अंदर नॉन डेरिवेटिव है. नॉन डेरिवेटिव है मतलब कि वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. नाउ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी रिस्की, बट इफ दे आर डीलिंग विद अ नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो दिस इज लेस रिस्की, बट इट इज इन द फॉरेक्स. तो अगर फॉरेक्स में भी 1 मिलियन से भी ज्यादा, $1 मिलियन से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ओनली देन दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ LEI. Otherwise, they can do that without even LEI. Right? So these kind of terminologies and these kind of conditions are very important for you to remember. Right? चलिए आगे चलते हैं. We are coming up with the second instruction or circular of the RBI, which is RBI instruction on net open position in INR. तो क्या होता है net open position? Net open position is
how much is bought and how much is sold. What they have bought, what they have sold, INR. Now what banks do? Banks क्या करती हैं? INR खरीदती हैं, बेचती हैं in the forex market, right? अब क्योंकि there is a lot of pressure on our INR because of the world-like situation, right? Like war-like situation, and because of which the banks were taking that benefit कि इन्हें सस्ते में खरीदा जाए, INR जो उनके पास सस्ते में अवेलेबल है, and then they are selling it in the forex market, right? क्योंकि depreciate हो रहा है तो उनको महंगे में बेचने को मिल रहा है, right? And because of which the RBI has came up with this particular, we can say, notification. They said कि आपका net open position जो है $100 million से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. They have capped it so that banks do not do too much exposure in the NOP INR, that do not have a exposure in INR, right? इससे हमारा रुपये के ऊपर प्रेशर भी थोड़ा कम होगा, ज्यादा नहीं सेल करेंगे. Banks are currently selling it, right, in the market, and they are getting dollars in return. Okay, तो इससे क्या हो रहा है, और भी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है on the INR, right? So this is the limit that you need to remember, that NOP INR is being capped at $100 million, right? तो NOP INR क्या है? That the difference between the total long and the short rupee position. Long का मतलब है buying and short का मतलब है selling. Short sell, long buy, ठीक है? Compliances क्या है? April 10, 2026 is the we can say compliances. That is, they have to follow this particular deadline or capping system by 10 April. तो अगर इनसे ज्यादा भी था तो they have to maintain it. Objective is to manage the exchange rate risk, maintain the market stability, and we have to ensure the market stability. We are done with the second one also. Very simple. Third, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? यही था इंपॉर्टेंट. मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे. दिस इज द मेन पॉइंट. Okay, so let's just move. Now, what is the name of the direction? RBI revised instruction on ECB reporting. ECB stands for External Commercial Borrowing. ठीक है, तो what RBI have done? RBI ने कहा कि I am giving you the revised instruction कि आप किस तरह से मुझे बताएंगे कि आपने कितनी external commercial borrowing करी है. ठीक है, तो वो सबके लिए इन्होंने क्या कर दिया? रिवीजन करी है, right? So this applies to whom? This applies to authorized dealers category 1 banks. Who are authorized dealers category 1 banks? Authorized dealers category 1 banks are the banks which are being recognized by the RBI that yes, you can do the foreign exchange. You can take part in the foreign exchange. You can deal with the foreign exchange transactions. So there are few banks which are being recognized by the RBI. Not all banks are authorized dealers, right? So these are applicable to authorized dealers. अब देखिए, ये जो डायरेक्शन है ये बहुत ही ऑपरेशनल डायरेक्शन है. ऑपरेशनल डायरेक्शन है. अगर मैं कहूं कि यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो आई वुड से द चांसेस आर वेरी लेस. चांसेस आर वेरी लेस. ठीक है, जब आप पढ़ेंगे भी तो आपको कोई फैक्ट नहीं मिलेगा. जैसे कि उन्होंने दो फॉर्म्स की बात करी है. पहला क्या है? ECB 1 फॉर्म एंड रिवाइज ECB 1 फॉर्म ट्रीटेड एज नॉन फ्लो रिटर्न्स. सो इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने अब दो फॉर्म्स बना दिए हैं ECB के, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के. ठीक है, उसमें से लेट सबमिशन फीस भी आ गया टू कैलकुलेट द नॉन फ्लो कैटेगरीज. ठीक है, इसको हम छोड़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है, तो उसमें जो नई चीज ये थी कि अगर कोई भी लेट सबमिशन फीस होगी दैट विल बी पेड ऑनलाइन नाउ. ऑनलाइन दी जाएगी इंस्टेड ऑफ पेइंग इट थ्रू मनी कैश. तो ये इन्होंने कहा था नेफ्ट और RTGS से पेमेंट होगी of the fee which is late submission fee for filling the form with the RBI. क्योंकि RBI को इन्फॉर्म करना होता है that how much money you have borrowed. तो यही चीज है. I think we should leave this particular direction. आगे डिस्कस करते हैं. This is direction number 4.
ये भी जो डायरेक्शन है, दिस इज रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आरआरबीज क्या करती हैं? रीजनल रूरल बैंक्स, दे पे प्रीमियम, they pay premium in order to get insurance, in order to get insurance. Ma'am, what kind of insurance? Insurance on their deposits. By whom? By DICGC, by DICGC. Now this is what? This is a deposit and insurance credit guarantee corporation. This ensures that if bank pays them premium on a regular basis, the DICGC insures their deposit and their depositors as well up to the 5 lakh rupees, right? This is the case. But what RBI have said in this particular thing, that whenever a RRB is representing their financial statement, in that they should do the breakup of the premium. Breakup of the premium. क्या था कि आपने कितना पे कर दिया है, how much is arrears, that means how much is not yet paid by you, and you have to clearly mention कि आपका कितना अकाउंट है अभी तक DICGC के साथ, ठीक है? तो वो सब चीजें अब इनको ज्यादा क्लियरली ट्रांसपेरेंटली दिखानी पड़ेंगी। नाउ दिस इज समथिंग चेंज हैज हैपेंड इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट हाउ दे रिप्रेजेंटेड टू द RBI, ठीक है? तो उसमें चेंज हुआ है। तो अगेन आपका ये फोकस तो है नहीं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद रखेंगे, क्योंकि दे कैन नॉट आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इस तरह से और देखा भी नहीं गया इन पास्ट, तो हम सिर्फ पढ़ लेते हैं इसे समझने के लिए, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, अदरवाइज इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो स्कोप ऑफ डायरेक्शन क्या है? दिस इज स्कोप ऑफ डायरेक्शन इज अप्लाइज टू द RRB। अथॉरिटी कौन है, क्यों इशू की गई है ये डायरेक्शंस? अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। रीजन क्या है? टू अलाइन द रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क ऑफ द DICGC। जो भी हमारा रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क आया है नया DICGC का, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम ये भी पढ़ेंगे आज कि हमारा रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क क्या है DICGC का, क्योंकि ये फेब्रुअरी में आया था, ठीक है? तो फेब्रुअरी की भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, तो ये मैंने आज ही इसी में कवर कर लिया, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क क्या था, ठीक है? की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा दैट डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम व्हिच हैव बीन पेड बाय यू एंड हाउ मच इज द एरियर्स, पेंडिंग पेमेंट्स कितनी है। तो आपको इस तरह से ब्रेकअप करना पड़ेगा ऑफ योर प्रीमियम दैट इज बीइंग वी कैन से दैट एक्चुअली नीड टू बी पेड, और कितना पेड है और कितना एरियर्स है। स्टेट इफ प्रीमियर्स वर पेड ऑन टाइम, टाइम पे पे किया था या फिर डिले किया था पेमेंट में, तो वो भी आपको स्टेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय द RBI। अब ये तो आप याद नहीं रखेंगे, वेरी लॉजिकल इनफ टू अंडरस्टैंड, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? हम सीधा आते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस रिस्क बेस्ड प्रीमियम के फ्रेमवर्क पे, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड किया। नाउ दिस इज समथिंग दैट वाज रिलीज्ड इन फेब्रुअरी का सर्कुलर है, पर मैंने कहा नहीं इंपॉर्टेंट है तो लेट्स कवर इट। तो आई होप आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ दैट एवरी बैंक and their respective deposits are being insured, or we can say insured by DICGC. Consider this as an insurance company for a bank against their deposits, right? But there is a limit of 5 lakh rupees that the DICGC saves a single customer up to a limit of 5 lakh rupees. अगर उनके 2 लाख डिपॉजिट्स हैं तो they can give them 2 lakh rupees. अगर उनके 6 लाख डिपॉजिट है, the maximum limit here is 5 lakh rupees. So they can give 5 lakh only out of that 6 lakh rupees of deposits. Now this is what, because bank is getting into a failure like situation, बैंक कोलैप्स कर गया है, बैंक फेल हो गया है, in that particular case the DICGC come into role and they provide the premium to the bank. अब ये दे प्रोवाइड द इंश्योरेंस टू द बैंक। अब क्योंकि ये इंश्योरेंस है, ये एक तरह की इंश्योर कर रहे हैं उनके डिपॉजिट्स को। नाउ जस्ट लाइक यू बाय एन इंश्योरेंस, आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस लिया है, अगेंस्ट दैट इंश्योरेंस व्हाट डू यू पे टू द इंश्योरेंस कंपनी? प्रीमियम। आप प्रीमियम पे करते हैं, जस्ट लाइक दैट बैंक्स आर आल्सो पेइंग सर्टेन प्रीमियम टू द DICGC। अब वो जो प्रीमियम था पहले, देयर वाज अ फ्लैट रेट, यानी कि हर 100 रुपीज के लिए दे हैव टू पे 12 पैसे per 100 rupees. This was the rate. So this was what? This was a flat rate. That means all the banks have to pay 12 paisa against every 100 rupee which is being secured by the DICGC. Now
नाउ आरबीआई हैव केम अप विद द न्यू फ्रेमवर्क। आरबीआई ने कहा देखिए ये एक फ्लैट रेट है, इवन इफ बैंक इज अ गुड बैंक। अब गुड बैंक और बैड बैंक किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है? देखिए गुड बैंक वो बैंक है विच इज यू नो फॉलोइंग ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द आरबीआई। वो बहुत ही कम रिस्की बैंक है, उसके मेजोरिटी ऑफ द डिपॉजिट्स एंड मेजोरिटी ऑफ द लोन्स आर बीइंग सिक्योर्ड। तो अब क्या है ये? दिस इज अ काइंड ऑफ हेल्दी, फाइनेंशियली हेल्दी बैंक। ठीक है। और देन देयर कम्स द, वी कैन से बैड बैंक। बैड बैंक तो नहीं कहेंगे, पुअर, फाइनेंशियली हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है तो वी विल से पुअर बैंक। सो पुअर बैंक बिकॉज इट्स पुअर बैंक, और इसके ज्यादातर हम कहेंगे डिपॉजिट्स भी कम है और लोन पोर्टफोलियो भी इतना ज्यादा नहीं है और इतना सिक्योर्ड नहीं है, तो हम उसे कहेंगे पुअर बैंक क्योंकि फाइनेंशियली हेल्दी नहीं। तो अब इन्होंने ये क्राइटेरिया निकाल दिया है दैट वी विल डिफाइन द प्रीमियम बेस्ड ऑन द रिस्क। जिसमें रिस्क ज्यादा होगा हम उसे उसे ज्यादा चार्ज करेंगे विद द प्रीमियम, और जिस बैंक में कम होगा रिस्क वी आर गोइंग टू चार्ज लेस प्रीमियम विद दैट पर्टिकुलर बैंक। दिस इज द रिस्क मॉडल। ये क्या है? बेस्ड ऑन द रिस्क यू हैव डिसाइडेड द डीआईसीजीसी इंसेंटिव और वी कैन से प्रीमियम। ठीक है, आपने प्रीमियम डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन द रिस्क। वी आर कॉलिंग दिस एज risk based premium, right? So earlier we are discussing the background because there was a flat rate, and flat rate simple, a flat rate was simple but it was rewarding for a better risk management. Okay, it wasn't rewarding the better risk management. Okay, so DICGC allows differential premiums based on risk. Based on risk, now there is differential premiums. Let's see, do you have any doubt? Okay. Yes. Tell me what are your doubts. If you have doubts, please write it in the comment section. Why are you saying that, ma'am, I have a doubt? Just write it whatever doubt you have. Right? Uh, Ravi, we are not thinking about going backwards for the RBI circulars, but we are moving forwards with the March only. But if there is some kind of link between the current direction with the previous month direction, I'm going to include that also. Okay, don't worry about that. I'm going to make sure that every important thing is being covered either via the RBI 2 first, we can say, sorry, with the finance current affairs session or by this particular RBI circulars session. Okay, okay. So, effective date of this direction was April 1, 2026. That means it has been released and it has been effective now. Reviewed at least once every 3 years. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि अब ये जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम है, ये जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम है, इसे हम आफ्टर एवरी 3 years वी विल बी चेकिंग दिस। हम इसे हर 3 साल बाद चेक करेंगे, आर दीज रेलिवेंट और नॉट। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको फ्लैट रेट भी याद रखना है, दैट व्हाट वाज द फ्लैट रेट दैट वाज देयर अर्लियर बिफोर दिस रिस्क बेस्ड प्रीमियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, इसीलिए मैंने इंक्लूड करी है। ठीक है, रिस्क मॉडल कैसे डिवाइडेड है? बेस्ड ऑन योर टीयर 1 एंड टीयर 2। So tier 1 comes your scheduled commercial banks excluding the RRBs based on the supervisory rating and camels and potential DIF loss. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि आपको कितनी रेटिंग दी जा रही है एंड आपका कितनी रेटिंग है और कैमल्स ने क्या आपके लॉसेस बताए हैं, पोटेंशियल लॉसेस। बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड द रिस्क मॉडल। इसी तरह से टीयर 2 बैंक्स विच आर RRBs, cooperative banks which are again based on the camels and the potential losses. We are going to see that what is their risk model. Incentive क्या है? Risk model incentive up to 33.33 over card rate. Vintage incentive up to 25% for long standing contributors without any distress or claim. अब रिस्क मॉडल इंसेंटिव क्या कहता है और विंटेज इंसेंटिव क्या कहता है कि आपके पास कोई क्लेम नहीं आया, आपका कोई डिस्ट्रेस सिचुएशन नहीं आई है, इन दैट केस व्हाट इज द इंसेंटिव? 25% ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स। राइट, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? गेमर,
either you are asking your doubt in this particular live chat or I am going to block you. So decide what do you want. If you are here and you are a non-serious aspirant, here you are here just for fun, then let me tell you uh, that this is not a right way. You are disturbing other student as well, and you are wasting the time of other students. So as I was discussing that RBI with this direction have divided banks in two categories, in two groups. The one was with tier 1 and the other one was tier 2. Tier 1 includes the scheduled commercial banks excluding the RRBs. So premium depend upon their supervisory rating given by the RBI, their camel score, that is what is the bank health, financial health, and their possible losses in the insurance fund. Okay, so that is DIF. There, what are their possible losses to the insurance fund, right? So big banks are being judged using more detailed evaluation. If we talk about tier 2, which is generally includes your smaller banks such as RRBs, cooperative banks, right? These are being again judged by the camel score and the potential losses that can happen in their bank. So small banks have simple evaluation as compared to tier 1. So incentives are, we can say, reward for the good banks. So if a bank performance is well, it gets some discount, it gets some benefits for the premium. So a risk-based incentive up to 33.33% benefit. That means safer the bank is, it pays lower premium. Okay, so up to 33.33 percentage of benefit will be given to that particular bank. Then comes your vintage incentive. It is given when bank has been contributing for a long period of time and there is no failure and no insurance claim have been done. So up to 25 percentage of the benefit will be given. We will be calling this as vintage incentive. Okay. So as old you are as a bank, as stable you are as a bank, you are going to earn extra reward. So there are certain, we can say, cases which there are some banks which still pay fixed rate interest, and we can say fixed rate premium. So these are local area banks and payments bank. They are continue to paying 12 paisa 100 deposit, right? This is what they have. And if the UCB is under stress, say there is a cooperative bank, it is financially weak, it is under the RBI monitoring, then a normal higher fixed rate will be paid by that particular bank. And only after the improvement, they are going to shift to risk-based system, right? So if we can say the banks was running good, it was old, it was stable, but suddenly that this bank become risky. In that case, RBI can come and manually change the risk-based premium in that case, right? So again, that is a overriding rule that RBI have in this case. And banks must not disclose their rating and their premium account. They will be only telling that to the, we can say, RBI, because if they keep it, we can say, public to the customer as well, the customers might panic depending upon the how much premium that they are paying, right? So the safer the bank is, the less it pays, and risky the bank is, the more it pays. Okay. So as I told you that local area banks and payment bank going to get same kind of flat rate.
UCBs, which are under the monitoring and we can say under the supervision of RBI because they are weak banks, they pay card rate until they exist. That means extra premium, right? So what is the effective rate? Effective rate, your card rate. That means the DIGCC say that this is the rate at which you need to pay me, right? 1 minus the risk model incentive if you have any kind of reward because you are a safer bank, and 1 minus vintage incentive in case you are we can say stable and old bank. So for that also you are getting what? A incentive. So you will remember this particular formula. This is what your effective rate is. Okay. I hope it is clear. Just a second, guys. Let me solve this issue which is there in the live chat. Okay. So this was about your risk-based premium. Now let's just talk about one of the news that we have discussed in our finance current affairs session as well, that there was a new district formed in Goa and hence there is a lead bank as well. What is a lead bank? Lead bank is a bank which is being recognized by the RBI to lead a particular district. Okay, to lead a particular district. That lead bank ensures that whosoever financial institution works in that particular district, they are all coordinating with each other and they are all putting their efforts toward one particular goal. There is one particular goal based on which all their actions are being aligned. Suppose lead bank think that in that particular district, the financial inclusion is not there and people are not literate about the financial services and the product. So their agenda, a lead bank says that please, you all your financial institution, all of you must go towards the financial literacy. You bring more and more education among the people. So for that, their entire goals and actions should be aligned with that particular plan. So this is what being decided by whom? The lead bank. Again, which is being given by or recognized by the RBI. So there was a bank named, there was a district in Goa which is being newly created, which is Kushavati, and the lead bank in that case is SBI. Okay, and the code is 02W. You will remember the code as well. Okay, then comes your WMA limit. Okay, the WMA limit says the RBI have decided the limit, WMA limit for first half of financial year 27, right? So that is very important. WMA stands for ways and
means advances. Ways and means advances allows the government to take loan from the RBI, right? So that is being decided at rupees 2,50,000 crore. So within this limit, the bank can take a loan from the RBI, right? So this has to be remembered by you. Okay, this limit is very important. This line says 75% that if the government have already exhausted this particular limit of 2,50,000 crore by 75%, then the RBI may initiate their market borrowing by issuing their government securities in the market on behalf of the government. Then comes your, this is your, let's just forget about the numbering. So the next one is RBI ट्रेड रिलीफ मेजर्स डायरेक्शन. तो ये कौन सी डायरेक्शन है जिसमें एक्सपोर्टर्स को और इम्पोर्टर्स को कुछ ना कुछ रिलीफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है बाय द आरबीआई, बिकॉज हम सबको पता है दैट द पोर्ट दैट वाज देयर in order to ship energy goods and receive the goods and services from the abroad, that port was, blocked, right? Because of which exporters were not able to export their goods, and even if they have exported it, now it is returning back to India, है ना? So that was creating a lot of problems. इसीलिए exporters credit tenure has been extended to for 50 days. That means if they have taken a loan from a bank and then they have exported their goods and now they are not getting any return on that loan, that means the loan is not repaid by the foreign client, the loan can be extended by 450 days. तो ये आपको जो 450 डेज का रिलीफ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये हमें याद रखना है. ओके, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट अलाउड फॉर अनशिप्ड गुड्स. जो अनशिप्ड गुड है यानी कि जो शिप्ड ही नहीं हुई है, दीज आर फॉर दैट काइंड ऑफ लोन. रीजन क्या है? वी नीड टू सपोर्ट द एक्सपोर्टर्स विच आर फेसिंग रीपेमेंट स्ट्रेस ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल टेंशन. अथॉरिटी किसने दी है? आरबीआई लीगल पावर ने ये एक्ट और ये डायरेक्शन निकाली है. एप्लीकेबल टू ऑल द इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, कॉर्पोरेट बैंक, cooperative bank, commercial banks, all India financial institution, doesn't matter, but you have to provide certain relief to the individual or the exporter. This is going to be effective immediately. What are the key relief? Again, this has been provided you with the extended period of the credit in which you have to pay, and if goods are not shipped, repayment allowed from the domestic sale or the replacement of another exporter order. Generally होता क्या है? Whenever a exporter is sending a good to the client, that client must pay the exporter for that money. With that money, they can pay the loan, right? Suppose this exporter have taken a loan in order to ship this particular good to the individual, ठीक है? तो उसके लिए इनको यही वाला जो पेमेंट मिला है उसी से ही आपको लोन रीपेमेंट करनी पड़ेगी. But they have said that exporter now have the flexibility that even if that particular good is not being shifted, we can say shipped by you as an exporter, आप किसी और ट्रेड से भी पैसा लाकर दे सकते हैं. आपने कोई डोमेस्टिक सेल करी है, इंडिया टेरिटरी में ही आपने कोई सेल करी है ऑफ अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, इन दैट केस ऑल्सो आपको जो भी पैसे मिले हैं इन रिटर्न ऑफ दैट, you can use that money in order to repay the loan. And for the replacement, that means you can replace the payment with any other export order. मान लीजिए it was not about this particular good. Exporter ने कोई टेक्नोलॉजी भी कोई सर्विस ट्रांसफर करी है टू द फॉरेन इंडिविजुअल अगेंस्ट विच ही गॉट सम मनी, ठीक है? तो वो वाली मनी भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रीपे द लोन. दिस इज द न्यू फ्लेक्सिबिलिटी विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्टर्स सो दैट बैंक्स का भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ध्यान रखा जाए एंड एक्सपोर्टर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द रिलीफ एज वेल. Then comes RBI revised the direction on bank credit facility, which is going to be effective from July 1, 2026. ठीक है, तो अथॉरिटी कौन है? ऑब्वियसली who released it, under which banking regulation act के अंदर they have released this particular direction. Objective is to improve the clarity, risk management and prudential regulation को इंश्योर किया जा सके. जब हम पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली अभी बैंक्स क्या करते हैं?
अभी बैंक्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि लोन प्रोवाइड करवाते हैं। एंड लोन किस किस चीज के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, सपोज दे हैव गिवन अ लोन टू अ पर्सन सो दैट दे कैन बाय अ कंपनी। Suppose this bank have given a loan to an individual so that they can buy the shares in the market, right? Just like that, the bank have given a loan to the company so that they are able to carry on their basic operational day-to-day performances, right? They can also give loan for to a non-financial company as well. Any company for any kind of reason. Say उनको अपना expand करना है business, right? और कभी कभार कुछ लोन्स कैसे होते हैं कि उनके अगेंस्ट उन्हें क्या मिलता है, कोलैटरल मिलता है, राइट? इन सब के लिए क्या देते हैं, लोन्स देते हैं बैंक। अब इसी के अंदर ही इन्होंने कुछ डायरेक्शंस निकाली हैं दैट विच बैंक कैन गिव दिस पर्टिकुलर लोन और विच बैंक कैन नॉट। इफ दे डू देन व्हाट आर द लिमिट्स एंड द रेगुलेशन ओवर दिस। तो वो जो लिमिट्स हैं वो आपको याद रखनी है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो एक्सपेंडेड डेफिनेशन क्या है किस चीज की, कि आप किस किस को लोन दे सकते हैं, दे कैन गिव लोन्स टू एक्विजिशन फाइनेंसिंग, यानी कि आप किसी इंसान को लोन दे रहे हैं सो दैट दे कैन एक्वायर अ कंपनी। ब्रिज फाइनेंसिंग फॉर देयर डे टू डे वर्किंग कैपिटल में कुछ थोड़ा सा गैप आ गया तो यू आर ब्रिजिंग दैट फाइनेंस, ठीक है? तो दैट काइंड ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो अगेन बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक फॉर द कंपनीज। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज को, यानी कि ब्रोकर्स को भी आप लोन दे सकते हैं। देयर इज नो सच थिंग कि आप ब्रोकर्स को नहीं दे सकते, तो ब्रोकरेज फर्म्स को भी आप क्या देते हैं, लोन देते हैं। कैश इक्विवेलेंट एलिजिबल सिक्योरिटी एलटीवी, ये सब क्या है, टर्मिनोलॉजीज हैं विच आर बीइंग यूज्ड व्हेन यू आर बीइंग गिवन विद द कोलैटरल। आपको कोलैटरल मिलती है, आइदर इट विल बी गिवन इन सिक्योरिटीज और इन फिजिकल एसेट और इन वी कैन से कैश, डिपेंडिंग अपॉन द collateral the LTV is being decided. LTV stands for loan to value, loan to value, ठीक है? इसी तरह से बहुत सारे लोगों को लोन दिया जाता है। बोर्ड अभी ओवरसाइट क्या क्या करता है, लोन्स अगेंस्ट द फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट यानी कि इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव। तो बोर्ड ओवरसाइट दीज थिंग्स कि अगर मेरी कंपनी, मेरा बैंक लोन दे रहा है टू दिस पर्टिकुलर एरिया तो मुझे उसे ओवरसाइट करना पड़ेगा। आई नीड टू लुक आफ्टर दिस कि कितना लोन दे रहे हैं, बिकॉज अगेन यू आर एक्सपोज टू द कैपिटल मार्केट, यू आर एक्सपोज टू द स्टॉक मार्केट, तो आपको रिस्क भी मेंटेन करना पड़ेगा। Just like that, bridge financing, acquisition finance, lending to capital market intermediaries, all these are being oversighted by the board. Infrastructure financing भी करते हैं, certain provisions are being removed and InvIT equity acquisition linked to acquisition finance rules, ठीक है? वो कह रहे हैं अगर आप InvITs में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, तो in that case we are linking that with the acquisition financing rules, ठीक है? ये हम समझेंगे जैसे हमारे पास डायरेक्शन आएगी। पहला हमने देखते हैं एक्विजिशन फाइनेंस फ्रेमवर्क। दिस इज अलाउड फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। आप किनको दे सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, एंड यू कैन अलाउ देम टू एक्वायर कंट्रोल इन द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है? आप कंपनीज को भी डायरेक्ट लोन दे सकते हैं ताकि वो दूसरी किसी कंपनी के कंट्रोल ले सकें बाय ओनिंग इट, राइट? नॉट अलाउड इफ द टारगेट हैज फाइनेंशियल सब्सिडरी। अगर उन्हें अपनी ही सब्सिडरी में पैसा लगाना है या फिर जॉइंट वेंचर में पैसा लगाना है, देन इट इज नॉट अलाउड, ठीक है? देन इट इज नॉट अलाउड, ठीक है? नॉट अलाउड इफ द टारगेट हैज फाइनेंशियल सब्सिडरी एंड जेवी। अगर उनका आगे कोई फाइनेंशियल सब्सिडरी है और जॉइंट वेंचर है विच इज इन द फाइनेंशियल वी कैन से सेक्टर, देन वी कैन नॉट अलाउड दैट। हम रीफाइनेंस तभी करेंगे जब पहले एक्विजिशन कंप्लीट हो गई है। सपोज आई हैव गिवन अ लोन टू यू, you are an individual so that you can buy certain shares of that company and you can acquire that company, but क्या हुआ, आपने वो लोन तो आपने यूज नहीं किया in order to acquire the company and now you are asking for refinancing of loan कि पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, I need some more loan. So again they are saying refinancing will be done only if the acquisition is complete. आपको अगर acquisition complete मिल गई है, only then we are going to again provide you the loan, otherwise not, because you haven't fulfilled the purpose of taking the loan. कंडीशन क्या है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि किस भी जगह पे कौन सी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं तो उसकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो दैट शुड बी वर्थ मोर देन 500 करोड़ और उनका कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना चाहिए एंड दे शुड हैव अ गुड रेटिंग। इफ दे आर अनलिस्टेड दे शुड हैव अ गुड रेटिंग। फंडिंग इज कैप्ड एट 75% of the acquisition value, less is from the acquired source.
तो कह रहे हैं अगर आपने 100 crore rupees इन्वेस्ट करने हैं in order to acquire this particular company, right? In that case, this 100 crore, 75 will be spent by me, that is bank, and 25% of the money will be brought in by the individual who is trying to buy this company. तो 100 करोड़ में से 75 करोड़ का लोन कौन दे देगा? बैंक दे देगा। एंड 25 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन लेकर आएगा? इंडिविजुअल लेकर आएगा इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट देयर मनी इन दिस एक्विजिशन फाइनेंसिंग। इसमें क्या होगा? दैट पता लगेगा दैट इसका खुद का भी स्टेक है इन द एक्विजिशन, सो दे विल थिंक ट्वाइस व्हाइल मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। इसके बाद क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर सेइंग डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन इक्वल टू 3:1। ठीक है, इसका क्या मतलब है? 3:1। और डेट इक्विटी का क्या मतलब है? दैट यू आर कंपेयरिंग योर डेट with the equity of the company. Now, if debt is huge as compared to the equity, say 300 crore and 100 crore. Now, this is what? This is a ratio of 3:1 debt to equity ratio. If debt इससे ज्यादा हो गया, यानी कि 400 crore हो गया या फिर 4000 crore हो गया, so that would be very huge. तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट है, too much in debt, कंपनी के पास हम पैसा नहीं लगाएंगे। So there is a very important requirement जहां पर हम चेक करेंगे that debt to equity ratio is less than equal to 3:1. Control must be acquired within 12 months. इसका क्या मतलब है? That once you have taken a loan, you have to use that loan in order to acquire that company within 12 months. ऐसा नहीं कि आपने अपने अकाउंट में पैसा रखा हुआ है and you are not using it, right? So again you have to acquire that company within 12 months. Collateral, yes, collateral is required. Collateral आप दे सकते हैं। तो आप क्या दे सकते हैं? टारगेट कंपनीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दे सकते हैं। जो भी आप कंपनी खरीदना चाह रहे हैं, यू कैन गिव द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी टू अस। आप उसी कंपनी के शेयर्स को हमें एज अ कोलैटरल दे सकते हैं। एडिशनल सिक्योरिटी भी हो सकती है इफ नीडेड, यानी कि जैसे कि कैश रिक्वायरमेंट, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर कोई और कोलैटरल जैसे कि हाउसिंग, बिल्डिंग, दैट कैन बी ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर we can say loan type. Again, this is going to be dependent upon the case to case. अगर the loan is being taken by a company in order to invest in their own subsidiary, तो उन्हें क्या चाहिए? कॉर्पोरेट गारंटी चाहिए। उन्हें गारंटी चाहिए that loans, whatever loans that you are giving to the special purpose vehicle or the subsidiary, that will be guaranteed by you. ठीक है, तो गारंटी मिलेगी तो बैंक्स को थोड़ा सेफ गार्ड रहेगा कि yes, there is no much we can say risk that is there. Restrictions on related party acquisition. अगर आप किसी अपने जाने पहचाने, मान लीजिए कि आपकी बुआ जी, आपके चाचा जी की कंपनी है, and then you are buying it. Again, there is a interest, there is one-sided interest that you have. Now, what is this? Now, there is a conflict of interest. You are not working for the betterment of the company. You are working for out of your own interest. So again, related party transaction is very harmful. So again, related party acquisition is not being allowed by the company in this case. Okay. Loan against the financial assets. What are financial assets? Financial assets, your any financial instrument, say equity. These are shares, your bonds, debentures, derivatives. ठीक है, अब इनके जो हम आगे डायरेक्शंस पढ़ने वाले हैं, these are dependent upon how risky this financial asset is. अब मान लीजिए अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं, derivatives are highly risky and they are very complex securities. तो इनके लिए जो उनसे भी regulations होगी, they are very risky. And if I talk about bond and debentures, they are less risky because there's a fixed rate of interest and fixed rate of return that I am expecting. And me as a bank, I've seen that this particular kind of securities or assets are very safe and less risky. So there would be lighter regulations and so on so forth. ठीक है, तो यही हमारा हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी when we are understanding it from the rules and regulation or from the RBI's point of व्यू। ठीक है, तो पहला दैट यस द बैंक्स आर अलाउड टू प्रोवाइड लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी एज पर द बोर्ड पॉलिसी। प्रोहिबिटेड यानी कि कौन से एरियाज में नहीं कर सकते? लोन अगेंस्ट इट्स ओन शेयर्स। बैंक अपने ही शेयर्स कोलैटरल में रखकर उन्हें लोन दे रहा है। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट। ठीक है, आपको बदले में मिला भी तो क्या? अपने खुद के शेयर्स। तो दैट इज नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड है। पार्टली पेड शेयर, पार्टली पेड शेयर नहीं लेंगे, इट इज फुली पेड और यू आर डूइंग समथिंग एल्स, कोलैटरल कुछ और ले रहे हैं आप। लॉक्ड इन सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज विच आर बीइंग ऑलरेडी लॉक्ड बाय सम अदर अथॉरिटी। ठीक है, मान लीजिए देयर वाज अ पर्सन
who took a loan from a brokerage firm. पहले उन्होंने छोटा लोन लिया ब्रोकरेज फर्म से, तो ब्रोकरेज फर्म ने कहा बिकॉज यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अस, आई एम गोइंग टू कीप दिस सिक्योरिटी विद मी, आई एम गोइंग टू लॉक इट. So if you pay, if any kind of profit you are not paying me, you are not paying me the loan, I am going to sell the securities and then I am going to recover whatever the amount is. अब now the securities are already being locked by whom? The brokerage firm. ब्रोकरेज फर्म ने पहले से ही उसे लॉक किया हुआ है. नाउ आरबीआई सेज दैट दिस फर्म इज ऑलरेडी बीइंग फ्रीज्ड बाय सम अदर फर्म, सो हाउ कैन आई टेक इट? सो लोन अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ वी कैन से शेयर्स आर अगेन प्रोहिबिटेड. आईडीआर्स, इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे. देन वी हैव शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर बायबैक, सो दीज आर ऑल प्रोहिबिटेड. ठीक है. इंडिविजुअल्स यस दे कैन टेक द लोन अगेंस्ट द शेयर्स. ठीक है. तो इसमें इन्होंने लिमिट लगा दी है. First is 60% of the shares and mutual fund है तो 75 to 85% of the shares. देखिए जो शेयर्स होते हैं यानी कि इक्विटी शेयर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. इक्विटी शेयर्स में आपको जो रिटर्न मिलता है दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज नॉट फिक्स्ड एंड द रिस्क इज ऑल्सो हाई. सो मान लीजिए एक इंडिविजुअल 100 करोड़ का लोन लेना चाह रहा है बाय कीपिंग सम शेयर्स, राइट. शेयर्स से शेयर्स इन्होंने कोलैटरल में रखे हैं विद द बैंक. तो बैंक विल गिव 60% ऑफ दिस लोन, दैट इज 60 करोड़ सिर्फ दिया जाएगा एज अ लोन बाय द बैंक. दिस इज व्हाट? दिस इज अ एलटीवी, लोन टू वैल्यू ऑफ शेयर्स. शेयर्स की क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ लोन? तो अगेंस्ट दिस 100 करोड़ 60 करोड़ विल बी गिवन एज अ लोन टू यू. Just like that, mutual fund थोड़े कम रिस्की होते हैं because they are investing in not one single company, they are investing in various we can say companies. तो इनका LTV बढ़ गया है. That is अगर आपने 100 करोड़ का लोन लिए 75 to 85 करोड़ आपको मिल जाएगा against those mutual funds. इसी तरह से डेट सिक्योरिटीज भी सेफ होती हैं, तो अगेन यू कैन गेट 75 to 85% ऑफ द LTV. ब्रीच इज करेक्टेड विद इन 7 वर्किंग डेज. अगर कोई आपने ब्रीच कर दी है, कोई नॉन कंप्लायंसेस है, देन यू कैन करेक्ट इट विद इन 7 वर्किंग डेज. कैपिंग है, ओवरऑल कैपिंग भी है इन टर्म्स ऑफ नंबर, दैट इज 1 करोड़ टोटल एंड 25 लाख फॉर द सेकेंडरी मार्केट. ठीक है. 1 करोड़ से ज्यादा आप लोन नहीं दे सकते हैं टू द इंडिविजुअल एंड 25 लाख का लोन दे सकते हैं टू द इंडिविजुअल इफ दे आर डीलिंग इन सेकेंडरी मार्केट. आईपीओ के लिए एंड एफपीओ ईसॉप के लिए लोन अप टू 25 लाख इज अलाउड विद अ 25% मार्जिन. ठीक है. नॉन इंडिविजुअल्स के लिए यानी कि कंपनीज को अगर हम लोन दे रहे हैं, बिजनेसेस फर्म को लोन दे रहे हैं, देन पर्पस ऑफ द लोन कुड बी फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल के लिए आप लोन दे रहे हैं, फॉर प्रमोटर टू कंट्रीब्यूट विद सम सेफगार्ड्स. तो अगेन एलटीवी यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, इसे जूम कर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस टेबल. तो यहाँ पर एलटीवी रिक्वायरमेंट आपको बताई हुई है, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज द कोलैटरल, व्हाट इज द एलिजिबल सिक्योरिटी दैट यू हैव पुट फॉर द कोलैटरल. तो अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई हैं तो बैंक कैन डिसाइड द एलटीवी बेस्ड ऑन देयर ओन, दैट इज वो 80% देना चाहते हैं, 90% देना चाहते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी सेफ सिक्योरिटीज. सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स अगेन दीज आर सेफ सिक्योरिटी, हेवन एसेट है, तो वी कैन कंसीडर इट अ वेरी सेफ एसेट और बैंक्स डिसाइड कर सकते हैं अपने खुद का एलटीवी. अगर हम लिस्टेड शेयर्स की बात करें और कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज हैं, देन 60% ऑफ द एलटीवी. म्यूचुअल फंड है, लेस रिस्की है, 75%. डेट म्यूचुअल फंड, दीज आर प्योरली इन्वेस्टेड इन डेट, जहां से फिक्स रिटर्न आएगा ही आएगा. ऊपर वाले म्यूचुअल फंड में दे आर एक्सक्लूडिंग द डेट, तो मतलब कि यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं ज्यादा, तो रिस्की है, तो 75%. डेट म्यूचुअल फंड 85% से आपको ज्यादा मिल जाएगा बिकॉज लेस रिस्की है. एंड लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज जिनमें आपको ए रेटिंग मिली हुई है, तो अगर आपको अच्छी रेटिंग मिली है देन 85%. इफ नॉट अ बैड रेटिंग बट मिडल हम कह सकते हैं मॉडरेट रेटिंग दी है, तो आप यू कैन गो विद 75%. सो दिस इज द इंटायर टेबल. अगर आप लोन दे रहे हैं टू द कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज का क्या मतलब है? दैट यू आर गिविंग लोन टू द intermediaries, brokerage firms को दे रहे हैं, which are in the front line, who are helping you as an individual to take part in the stock market, right? So that kind of intermediaries can also be provided with some kind of loan. So
यू कैन गिव देम लोन फॉर द वर्किंग कैपिटल, ताकि वो अपनी डे टू डे परफॉर्मेंस कर पाए। ऑपरेशनल फंडिंग, यानी कि ऑपरेशनल, अगेन ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस के लिए, डे टू डे वर्किंग के लिए दे कैन बी प्रोवाइडेड विद सम मनी। गारंटीज फॉर मार्जिन और सिक्योरिटी, आपको एज अ बैंक यू आर गिविंग गारंटीज फॉर द मार्जिन और सिक्योरिटी। मार्जिन क्या होता है? दैट यू आर प्रोवाइडिंग, द ब्रोकरेज फर्म ऑल्सो प्रोवाइड मार्जिन। मान लीजिए देयर इज एन इंडिविजुअल, उसको 25,000 रुपीज के क्या खरीदने हैं? शेयर्स खरीदने हैं, बट उसके पास अभी कितना है? सिर्फ 20,000 रुपीज है। सो 5,000 इज बिंग प्रोवाइडेड बाय दिस ब्रोकरेज फर्म। व्हाट इज दिस? दिस इज मार्जिन। तो ये मार्जिन को कौन गारंटी करेगा? बैंक्स, राइट? कि अगर उन्होंने दिया, आई एम गोइंग टू पे दैट ऑन बिहाफ ऑफ दैट कस्टमर। सो दीज आर गारंटीड फॉर द मार्जिन और द सिक्योरिटी। किस चीज के लिए लोन नहीं दे सकते? फॉर फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। अगर ब्रोकरेज फर्म अपने खुद के लिए शेयर्स और बॉन्ड्स खरीद रही है, देन दैट काइंड ऑफ फाइनेंसिंग विल नॉट बी डन, राइट? कोलैटरल, जनरली 100% कवर, रिलैक्सेशन फॉर द इंट्राडे फंडिंग। दे आर सेइंग वैसे हम जनरली 100% कवरेज लेते हैं फॉर द कोलैटरल। अगर आपने हमसे 10 करोड़ का भी लोन लिया है, वी आर गोइंग टू कीप अ 10 करोड़ वैल्यू ऑफ एसेट फॉर द सेम, राइट? बट फॉर द इंट्राडे फंडिंग, यानी कि जो वन डे ट्रेडिंग होती है, राइट, फॉर दैट वी हैव सम रिलैक्सेशन। वी कैन प्रोवाइड यू से 60%, 30%, 50% ऑफ द collateral is required in that case, which is much more less. Strict norms for the collateral quality, haircuts, margin calls and the ownership. क्योंकि margin calls, haircut ये बहुत ही ज्यादा important होते हैं and they are involving a lot of huge amount by the brokerage firm. तो इस केस में there is a strict norms. collateral की क्या quality है, क्या ownership है, वो सब कुछ बहुत ही कंसिडरेट किया जाएगा। आपके लिए यही पॉइंट्स बहुत हैं, द फर्स्ट 3 फॉर द लेंडिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। इतना याद भी नहीं रहता है, और इतना भी अगर आप कर लेंगे दैट इज मोर देन इनफ। इंप्लीमेंटेशन कब से होगी? दिस इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय जुलाई 1, 2026। तो बहुत ही, जब आपका एग्जाम हो रहा होगा उसी के टाइम ही है, तो अगेन दिस डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। दिस हैज रिप्लेस द February 2026 डायरेक्शन। ऐसी ही सेम डायरेक्शन February में निकाली थी, दोबारा से इन्होंने रिविजन करके दोबारा मास्टर डायरेक्शन निकाल दी। सो अगेन वो कह रहे हैं कि ये रिप्लेस कर दी गई है, ठीक है? तो एग्जिस्टिंग लोन्स जो हैं, दे आर कंटिन्यू टू बी अंटिल मैच्योरिटी एज पर द प्रीवियस लॉ। तो जैसा पुराना लॉ चल रहा था वैसे ही मैच्योरिटी, टिल मैच्योरिटी दे आर गोइंग टू फॉलो दैट लॉ। बट अगर कोई नया लोन दिया है, देन दिस इज गोइंग, दोज लोन आर गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं, पहले हमने बात करी थी कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट फैसिलिटी की, अब हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस क्रेडिट फैसिलिटी की। देखिए मोर एंड लेस दोनों की ट्रांजैक्शन और क्रेडिट फैसिलिटी सेम है, पर क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक अब कैसा बैंक है? स्मॉल बैंक है। इट कैन नॉट गिव लार्ज और बिग कम्प्लेक्स लोन्स, इतनी हमें क्लैरिटी है। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन ऑल्सो कैन नॉट गिव एक्विजिशन लोन्स। लोन्स अगेन एक्विजिशन फाइनेंस, ये इन्हें मना किया हुआ है। ये आपको मेन चीज है जो याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि मैम स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्विजिशन फाइनेंस के लिए लोन नहीं दे सकते, बिकॉज दीज आर स्मॉल बैंक्स, और वाइल वी आर एक्वायरिंग सम एनी काइंड ऑफ कंपनी दैट इन्वॉल्व्स ह्यूज मनी, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक एज अ स्मॉल बैंक दे कैन नॉट गिव टू मच बिग लोन एंड कॉम्प्लेक्स लोन नहीं दे सकते। तो इनका थोड़ा सिंपलर वे में ही चलता है लोन। अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये डायरेक्शन को इशू करने का दोबारा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग करना चाह रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। अगेन इन्होंने डेफिनेशन दी है फॉर द कोलैटरल सिक्योरिटी एसेट विद सिक्योरिटी चार्ज इन फेवर ऑफ द लेंडर। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, broking firms, custody, clearing corporations. This excludes standalone primary dealers or qualify counter clearing counterparty. ठीक है, these are excluded as a CMI, which is capital market intermediaries. Capital market intermediaries से आप समझेंगे brokerage firm, clearing companies और custodies, जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड काउंटर पार्टीज है, काउंटर क्लियरिंग काउंटर पार्टीज है, दे आर ऑलरेडी बीइंग क्वालिफाइड बाय द आरबीआई, तो दे आर वेरी सेफ, तो उनको लोन की जरूरत नहीं है, राइट? और आप कोलैटरल में क्या क्या कंसीडर करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश होगा डिपॉजिट विद द बैंक, और ओवरनाइट म्यूचुअल फंड। एलिजिबल सिक्योरिटी दैट यू कैन गिव
to the bank as a loan against the loan, which is group 1 listed shares, equity, preference shares, high quality shares ले सकते हैं, government securities दे सकते हैं, listed debt दे सकते हैं, which is having a rating of more than triple B, mutual funds which are redeemable and are listed, ETF excluding the commodity ETFs. Commodity ETFs बहुत ज्यादा volatile होते हैं, जैसे कि ऑयल या फिर हम वेजिटेबल्स का ले लें या फिर किसी भी अदर कॉमोडिटी का ले लें, तो दैट इज वेरी वॉलेटाइल. ईटीएफ्स रिलेटेड टू वी कैन से सेफ हेवन गुड्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, तो वो हम ले सकते हैं. रीट्स एंड इन्वेस्ट, तो ये जो ट्रस्ट है यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दोनों ही बहुत सेफ हैं, यूनिट्स हैं विच आर बीइंग रिलीज्ड बाय द ट्रस्ट. So these kind of securities are again valid as a security against the loan. Asset created from loan. जो भी आपने लोन से एसेट क्रिएट करी है, मान लीजिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दैट आई एम एन इंडिविजुअल, मैंने लोन लिया और मैंने लोन लेकर कार खरीदी. नाउ दैट कार इज अ लोन, दैट कार इज अ एसेट विच इज बीइंग क्रिएटेड आउट ऑफ लोन. ठीक है, इस तरह से कंपनीज भी ऐसे सेम करती हैं काम. दे आर टेकिंग अ लोन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मशीनरी इन देयर कंपनी. ठीक है, सो दैट मशीनरी इज नाउ अ एसेट अगेंस्ट दैट लोन. अगर आपने लोन नहीं पे किया देन वी आर गोइंग टू पिक दैट एसेट. इसी तरह से एलिजिबल सिक्योरिटी वो भी रहेगी. बोर्ड का क्या रोल रहेगा? बोर्ड क्या देखेगा? दैट व्हाट आर द लोन्स विच आर बीइंग गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा रिस्क आता है, एंड each and every loan which is going for this particular securities that will be cited or that will be oversight by the board. New policy required for lending to brokers and market players. अगर कोई भी lending की जा रही है to the market intermediaries, then we have to look that. Board have to look after that कि क्यों दे रहे हैं, what are the purpose, and the broker are fine. Prohibited loan, कौन से loans नहीं दे सकते? So अगेंस्ट ओन सिक्योरिटी, मैंने आपको समझाया था कि बैंक्स अपना खुद का या फिर कंपनी खुद के शेयर ऑफर कर रही है या फिर बैंक्स के शेयर ऑफर कर रही है, बोथ आर इनएलिजिबल इन दैट केस. एक्सेप्शन क्या है? लोन अगेंस्ट ओन इंफ्रा बॉन्ड्स. इंफ्रा बॉन्ड्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, दीज आर स्टेबल right for a longer period of time, so yes they can take it as a collateral. इसकी भी लिमिट है up to 10 lakh rupees only 10 lakh rupees. कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्रोहिबिशन पढ़ रहे थे, दैट banks should not give loan against these security. What are these security? तो हमने पहले पढ़ा, against own securities. Bank should not give loans against its own shares and bonds. However, there is an exception कि yes, the banks can accept their own infra bonds if they are up to a maximum loan of 10 lakh rupees. ठीक है, क्योंकि ये यार these are very small and controlled exception है ये बहुत. ठीक है, then comes your partly paid shares, right? Then comes your partly paid shares. These are shares where full payment is not yet done. So why they are not allowed? Because future liability for the banks is still existing. For that kind of loan, bank is not going to take the responsibility. So value is uncertain for that partial paid shares. So they are not going to take that collateral because ultimately this is a risky collateral. Then comes your locked in securities.
Now, locked in securities means security that cannot be sold for a certain period of time. They are already being locked by some other authority or firm. Then again, there is no liquidity. If there is no liquidity, then it is highly risky. So bank is not going to accept that collateral as well. Indian Depository Receipts, IDR. IDR stands for Indian Depository Receipts. These represent shares of the foreign countries, foreign companies. There's a foreign company, they have issued their shares and bank is selling off those foreign shares to the Indian market. So that is Indian Depository Receipts. Why they are not considered as a collateral? First reason is IDRs are highly risky. They are highly risky and they are very complex asset because first it is being issued to banks. इंडियन बैंक्स को पहले सेल किया गया है. फॉरेन कंपनीज पहले इंडियन बैंक्स को सेल करती हैं अपने शेयर्स. फिर इंडियन बैंक्स क्या करते हैं, ये शेयर्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू आईडीआर और फिर डोमेस्टिक सिटीजन्स जो हैं उनको सेल करती हैं. अब ये देखिए इनका कितना रूट है, इनको कन्वर्ट किया जा रहा है. पहले कंपनी ने अपने ओनरशिप को पहले कन्वर्ट किया इनटू शेयर्स एंड देन फिर उन्होंने सेल किया टू द बैंक एंड देन बैंक क्रिएटेड सिक्योरिटी आउट ऑफ इट आइडिया. कितना कॉम्प्लेक्स है. सो अगेन ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इनमें लिक्विडिटी भी कम होती है. दैट मीन्स दे आर नॉट बीइंग जनरली वेरी क्विकली, दे आर नॉट क्विकली सोल्ड एंड बॉट इन द मार्केट and because of their illiquidity they are not being we can say accepted as a collateral for the banks, because any collateral which is less liquid is not going to be a collateral, we can say a safe collateral for the bank, right? Securities for the prohibited entities. Now there are some restricted entities which are being restricted by the regulator because of the legal and the compliances risk, right? Considering that risk, banks are not allowed to accept those collateral. So again, banks must avoid these kind of collateral, right? Then loans for the share buyback. Company borrowing money to buy back its own shares. मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी जो कंपनी थी मैं कह सकती हूँ पहले वो फेल हो गई थी, डिफॉल्ट हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी, राइट? इट वाज हम कह सकते हैं बैंक करप्ट हो गई थी. उसके बाद दिस वाज ओन्ड बाय सम अदर पर्सन, उसको सेल किया गया उस कंपनी को और फॉर द रिकवरी आईबीसी में गई, उसको रिजॉल्व किया गया और उस कंपनी को किसी और को सेल कर दिया गया. अब कौन होल्ड कर रहा है? समवन एल्स इज होल्डिंग माय कंपनी, राइट? नाउ इन ऑर्डर टू गेट माय ओनरशिप बैक टू दैट कंपनी आई एम टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक. RBI says, bank says no, I can't give you this kind of loan. This okay, so this will what will happen in this, that first of all it's a risky company, already वो किसी resolution के थ्रू जा चुकी है. Second, अब क्योंकि आप बाय बैक कर रहे हैं उन शेयर्स को कंपनी के, तो दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज व्हाट देयर प्राइसेस ऑफ शेयर्स. तो मार्केट वोलेटिलिटी होगी विद दैट पर्टिकुलर लोन, तो हम ये काम नहीं करेंगे, राइट? Then comes your CPs and NCDs with a maturity of less than 1 year. CPs का मतलब है commercial paper और NCDs का मतलब है non convertible debentures. ठीक है? These are not allowed. These are again not allowed. These are again not allowed. क्यों? क्योंकि इनकी maturity कम होती है, less than 1 year. क्योंकि इनकी maturity कम होती है, these are very volatile और बहुत ही ज्यादा रिस्की भी होते हैं, एंड दैट इज द रीजन बैंक इज नॉट गोइंग टू कीप देम एज अ कोलैटरल. ठीक है? लेंडिंग टू इंडिविजुअल स्कोप includes individual and HUF. When you are lending to individual, who are included in individual? The individuals and the Hindu undivided family. These are non-commercial. So again, your same table has been given. That means listed shares है तो 60%, इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 75%, ओनली डेट म्यूचुअल फंड है तो 85%, डेट सिक्योरिटी विद अ गुड रेटिंग 85%, डेट सिक्योरिटी विद अ मॉडरेट रेटिंग 75% एलटीवी है. सो दीज आर योर केसेस. तो ये भी एलटीवी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है. अगेन, अगर एलटीवी में कोई ब्रीच होती है, यू हैव टू करेक्ट इट विद इन 7 वर्किंग डेज. कह रहे हैं इक्विटी और म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन आप किस तरह से करेंगे एज अ बैंक, क्योंकि म्यूचुअल फंड को भी वैल्यू करना पड़ता है. तो हाउ दे आर बीइंग वैल्यूड बेस्ड ऑन 6 मंथ एवरेज. उनका लास्ट 6 मंथ का कितना एवरेज रहा है, यू विल टेक दैट, और प्रीवियस डे में कितना था उनका अमाउंट, whichever is lower we are going to take that.
प्रूडेंशियल लिमिट्स, अब ये लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट्स आपको याद करके जानी है, ये इंपॉर्टेंट है। इट सेज मैक्सिमम लोन टू अ पर इंडिविजुअल 1 लाख। आप कितना लोन दे सकते हैं एक इंडिविजुअल को? 1 करोड़। अगर तो वो सेकेंडरी मार्केट में डील कर रहे हैं 25 लाख, सेम एज वी हैव स्टडीड इन द कमर्शियल बैंक, राइट। आगे देखते हैं, आईपीओ में डील कर रहे हैं, देन मैक्सिमम लोन इज 25%, मैक्सिमम फंडिंग इज 25। बोरोवर का खुद का मार्जिन कितना होना चाहिए? 25%। दैट मीन्स दे आर ब्रिंगिंग 25% ऑफ देयर मनी इन ऑर्डर टू बाय दैट पर्टिकुलर आईपीओ। यू कैन नॉट गिव 100% ऑफ लोन टू बाय दैट, राइट। इसी तरह से बहुत ही जनरल है, जनरल बिजनेस लोन अलाउड है, दे सकते हैं, अलाउड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड प्रोडक्टिव पर्पसेस। Irrecoverable payment commitments, IPCs. IPCs are being generally given by banks. Banks issue irrecoverable payment commitment. Irrecoverable matlab that means they cannot take their steps back. Right? It is irrecoverable in any kind of scenario. So bank, if the liability comes, the bank have to pay that commitment. They have to make payment of that particular transaction. This is the commitment which is being made by the company, made by the bank. Okay? तो ये भी allowed है। अगर अगर क्या बोला इन्होंने? कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशंस, और हम कहेंगे इस तरह की पेमेंट अलाउ करने की भी क्या है? कंडीशंस है। व्हाट आर दोस कंडीशन? The bank has a right over payout securities or fully pre-fund the transaction. They are allowed to do that. But again, irrecoverable है, तो यहां पर लिखा नहीं है, मैं बता देती हूँ। irrecoverable है तो they have to keep some provision. Provisions में हम पढ़ेंगे कैसे provisions, वो हम कैपिटल एडिक्वेसी वाले फ्रेमवर्क में पढ़ेंगे, जो कि इसी के बाद ही है, ठीक है। उसमें पढ़ लेंगे जनरल कंडीशंस क्या है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मार्केट इंटरमीडिएरी रेगुलेटेड एंटिटी होनी चाहिए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करें, ये सब नॉर्मल सी हैं, ये इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। सीएमआईज को किस तरह का लोन दे सकते हैं? इस तरह का लोन दे सकते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मार्जिन, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दे सकते हैं। सिक्योरिटी में यू कैन एक्सेप्ट द मार्जिन रिक्वायरमेंट और द सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई भी कोलैटरल दे सकते हैं। अगेन कोलैटरल मिनिमम इज 50% collateral and 25% should be in cash. This is the collateral requirement for whom? For CMIs. There are certain prohibitions. What kind of loan that you cannot give to CMIs? These are proprietary trading and own investment. They cannot use the loan in order to trade themselves in the stock market. This is not allowed. Okay. Exception that market makers are allowed to get fully secured loan, warehousing debt securities maximum 45 days, working capital loans 100% collateral होना चाहिए. This is the मेन कंडीशन कि वर्किंग कैपिटल लोन्स क्या होगा? 100% कोलैटरल होगा, और वेयर हाउसिंग डेट सिक्योरिटीज मैक्सिमम 45 डेज की होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट इट फुली सिक्योर्ड। बैंक कितना गारंटीज कर सकते हैं? इफ इट इज फुली सिक्योर्ड, अगर जो सीएमआई है उन्होंने गारंटीज के अगेंस्ट फुली आपको क्या दिया हुआ है? कोलैटरल दिया हुआ है, 100% कोलैटरल दिया हुआ है, और क्या है साथ में? लेस देन 50, मोर देन 50% का कैश और एफडी दिया हुआ है, तो गारंटीज भी दे सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये किसके बारे में डिस्कस कर रहा है? सिक्योरिटी कवरेज के बारे में डिस्कस कर रहा है कि कोलैटरल से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। तो पहले तो वो कह रहे हैं कोई भी फैसिलिटी दे रहे हैं, यू मस्ट हैव 100% सिक्योर्ड, 100% सिक्योर्ड होना चाहिए। आप किसी भी तरह का लोन दे रहे हैं इन एनी काइंड ऑफ, वी कैन से, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो ज्यादा रिस्की अवेन्यूज ले नहीं सकता,
दे हैव टू मेक श्योर दैट दे हैव 100% सिक्योर्ड। तो उसके लिए कोलैटरल भी क्या क्या हो सकती है? एलिजिबल सिक्योरिटीज, कैश, फाइनेंशियल एसेट्स, प्रॉपर्टी, रिसीवेबल्स, बैंक गारंटी हो सकती है। किसी और बैंक ने गारंटी दी है, दैट कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन दिस केस। However, intraday limits में there are certain we can say conditions। वो क्या conditions हैं ये हम समझ लेते हैं। देखिए, इंट्रा डे में क्या होता है? दैट यू आर डूइंग ट्रेड फॉर 1 डे। तो क्योंकि 1 डे के लिए ही है, सो इसके क्या फायदे और नुकसान है? फर्स्ट, कि इंट्रा डे में भी लॉसेस हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, बट इट इज वेरी लेस टाइम, इट इज वेरी लेस टाइम। ठीक है, तो इंट्रा डे में या तो फिर आपकी क्लोज हो जाती है ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ द मार्केट आवर्स, और यू मिड वे में ही आप कोई एक्शन ले लेते हैं इन ऑर्डर टू टेक आउट योर मनी फ्रॉम द इंट्राडे। ठीक है, दो ही कंडीशन है, या तो फिर क्लोज हो जाएगा अपने आप व्हेन मार्केट एंड्स, और आपने मिड ऑफ द डे में कोई एक्शन ले लिया एंड यू हैव रिकवर्ड योर मनी। तो सो द चांसेस ऑफ डिसीजंस आर वेरी, हम कह सकते हैं क्विक हो सकते हैं। सो फॉर द इंट्राडे लिमिट्स देयर आर सर्टेन रिलैक्सेशन। क्या कह रहे हैं? क्या कि आपको सिर्फ 50% ऑफ द कोलैटरल देना है अगेंस्ट द लोन व्हिच यू हैव टेकन फॉर द इंट्राडे लिमिट। इंट्राडे ट्रांजैक्शन के लिए यू कैन गिव मी अ लोन ऑफ अप टू 50, यू कैन गिव अ कोलैटरल ऑफ अप टू 50%, राइट? मार्जिन ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग इट शुड बी फुली सिक्योर्ड, और 50% से ज्यादा आपको कैश भी देना है। इक्विटी हेयर कट, इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इक्विटी देन मिनिमम हेयर कट आप कितना करेंगे? 40%। मिनिमम हेयर कट का क्या मतलब होता है? अगर आपने 100 करोड़ का लोन दिया है फॉर बाइंग द इक्विटी शेयर्स, तो उसका हेयर कट कितना होगा? 40%। 40% का क्या मतलब है? दैट आप इसमें से 40% वैल्यू कट कर लेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 40 करोड़। नाउ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस, comes out to be 60 करोड़। तो ये आपको मनी मिलेगी एज अ लोन टू यू एज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी मार्केट, राइट? सो दिस इज व्हाट अ हेयर कट विच इज एप्लीकेबल ऑन द इक्विटी शेयर्स। तो आप ये सब कुछ याद रखेंगे। ठीक है, स्पेशल रिलैक्सेशन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है जितना हमने अभी पढ़ा है? क्या क्लियर है? अब हम बात करते हैं नॉन फंड बेस्ड services की। Non fund based means that your money is not involved. You as a bank, your money is not being involved. So bank is not giving money directly, but they are giving certain kind of guarantee. Now guarantee, whenever we talk about guarantee, the liability situation in future can come or may not come, right? So that becomes your contingent liability. Based on the scenario, the liability may occur or may not occur. So the bank is not fully involved, their funds are not being fully involved from the first day that they have given the guarantee. आपने पहले दिन गारंटी दी, अब पहले दिन आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे, आउट ऑफ पॉकेट देयर विल बी नो ट्रांजेक्शन, बट दिस इज अ गारंटी बिकॉज देयर इज अ फ्यूचर लाइबिलिटी दैट मे अराइज और मे नॉट अराइज। तो उसके लिए दे आर आस्किंग दैट बैंक्स कैन नॉट गिव गारंटी
टू सपोर्ट द लोन्स गिवन बाय अदर रेगुलेटेड एंटिटीज। ठीक है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोई और रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए आप कोई भी गारंटी नहीं लेंगे। यू आर टेकिंग अ गारंटी फॉर एनी अदर बैंक, हाउएवर यू आर अ स्मॉल बैंक, नहीं, आप स्मॉल बैंक है, स्मॉल बैंक ही रहिए, आप किसी और रेगुलेटेड एंटिटी के लिए गारंटी नहीं देंगे, राइट। देन देर आर टू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है? काउंटर गारंटी और एसबीएलसी। काउंटर गारंटी में कह रहे हैं अ गारंटी गिव्स टू सपोर्ट अनदर गारंटी, नॉट अ लोन। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एक गारंटी दी हुई है किसी बैंक ने, उसी गारंटी को आप गारंटी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? काउंटर गारंटी, राइट। सो द फर्स्ट, से एग्जांपल बैंक ए, देयर इज अ बैंक ए दैट गिव्स गारंटी टू अ क्लाइंट, राइट। नाउ बैंक बी इज सपोर्टिंग बैंक ए विद द काउंटर गारंटी, राइट। सो दिस इज अलाउड, क्योंकि यहां पर लेस चांसेस हैं ऑफ हैविंग अ guarantee getting liable. Then becomes your SBLC. SBLC stands for standby letter of credit. Standby letter of credit means that bank give guarantee for the international transaction. So this is allowed for the foreign banks and the trade and global transaction. Foreign banks के लिए आप कर सकते हैं and trade और global transactions के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। So this was about your नॉन फंड रिस्ट्रिक्शंस। इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2026 से, एंड उससे पहले वाला अडॉप्टेड जो है, दीज आर गोइंग टू बी सुपरसीड्स, यानी कि इसे डायरेक्शन को रिप्लेस कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक कंसंट्रेशन रिस्क। देखिए कंसंट्रेशन रिस्क क्या होता है? कंसंट्रेशन रिस्क इज अ रिस्क wherein banks are giving too much big loan to one single individual। ठीक है, एक इंडिविजुअल को क्या दे रहे हैं? लोन दे रहे हैं, एंड दे हैव गिवन अ बिग लोन, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन रिस्क दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो इस चीज को मैनेज कैसे करना है, इसके लिए इन्होंने कमर्शियल बैंक्स के लिए कुछ रेगुलेशंस निकाली हैं, विच इज बिंग रिवाइज्ड। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक? द रोल ऑफ बैंक इज टू the role of board is to bank must now have a policy for setting the intraday exposure। the intraday, अभी हमने बात करी थी इंट्राडे की, ये all these direction are related to each other। ठीक है, तो इंट्राडे हमने ट्रांजैक्शन की बात करी कि अगर बैंक का कोई इंट्राडे एक्सपोजर है तो उसकी क्या लिमिट्स होनी चाहिए, तो वो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड खुद डिसाइड करेगा, आरबीआई ने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर दो तरह के हो सकते हैं, द वन इज डायरेक्ट, द अदर वन इज इनडायरेक्ट। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर का क्या मतलब है? दैट यू आर एक्सपोज्ड टू द मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो डायरेक्ट एक्सपोजर है, यानी कि आपने खुद पैसा लगा रखा है, ठीक है, यू हैव डायरेक्टली इन्वेस्टेड इन से डेरिवेटिव, शेयर्स आपने ले रखे हैं, राइट। इनडायरेक्ट क्या है? दैट यू हैव गिवन अ लोन टू एन इंडिविजुअल एंड नाउ दैट इंडिविजुअल इज investing that money in shares, debentures, derivative. So this is the indirect exposure and this is a direct exposure. Okay, so we need to understand investment exposure, that is directly to equity shares, preference shares। credit exposure, loans दिया है, advances दिया है to buy such shares and bonds। very simple। then there is a ceiling कि आप कितना कैपिटल मार्केट एक्सपोजर कर सकते हैं। देन इट इज 40% ऑफ योर टीयर 1 कैपिटल। द बैंक्स कैपिटल आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल। because your your tier 1 capital is a core capital that tells how your financial health is, so 40% of that can be your capital market exposure। more than this is not allowed for you as a commercial bank। for the direct investment there is a cap of 20%। so 40-20 का आप क्या रखेंगे? परसेंटेज याद रखेंगे, 40% टोटल, 20% डायरेक्ट, कि डायरेक्टली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते योर मनी इन द शेयर मार्केट। and there is a separate sub limit for the intraday transaction which is being decided by the board। ये board decide करेगा depending upon bid bank।
एक्विजिशन फाइनेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक है, बिग बैंक है, कम्प्लेक्स लोन दे सकता है, तो एक्विजिशन करने के लिए किसी कंपनी की देयर इज अगेन अ कैपिंग ऑफ 20%. सो 40-20-20% रूल यू विल रिमेंबर फॉर द कंसंट्रेशन रिस्क. दिस इज फॉर द कंसंट्रेशन रिस्क. जब हम कंसंट्रेशन रिस्क की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, CME की बात करते हैं. यू विल रिमेंबर दिस, वी कैन से दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय दिस नेम. ठीक है. कुछ एक्सपोजर्स को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द capital market exposure, that means for which there is no capping, such as investment in the joint venture, investment in the critical financial infrastructure institution, that is SIDBI, NABARD, NSE, BSE में अगर आपने इन्वेस्ट किया, टीयर 1 टीयर 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर बैंक, तो अगेन ये क्या है, ये कुछ सेफर एसेट्स हैं, सेफर हैं, तो हेंस वी आर नॉट कंसीडरिंग देम एज अ कैपिटल मार्केट एक्सपोजर. ठीक है. So these are certain basic and we can say safe exposure. Just like that, up to 70% of the underwriting commitment for book running, promoters shares, infrastructure, SPV, exposure to broker outside the commodity, ये सब कुछ ऐसे हैं जिनको कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में नहीं गिना जा रहा. ठीक है. इंट्राडे के लिए इन्होंने बता दिया है दैट कितना आप गारंटी दे सकते हैं. आईपीसी, इररिकवेबल पेमेंट कमिटमेंट, हमने इसके बारे में पढ़ा था. अब बैंक, कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, इसके लिए क्या कर सकता है, गारंटी दे सकता है फॉर द इंट्राडे, फॉर द ओवरनाइट, राइट. तो अगर तो इंट्राडे ट्रांजैक्शन है तो कितनी दे सकता है गारंटी, 30% ऑफ द नेट ऑब्लिगेशन. जितनी भी उनकी नेट ऑब्लिगेशन है टू बी पेड, 30% ऑफ दैट कैन बी गारंटेड बाय देम. तो इसकी कैपिंग कर दी बाय 30%. ओवरनाइट बेसिस पे है, यानी कि T+2 डे में हो रहा है, थोड़ा एक्सटेंडेड टाइमलाइन है. देन 50% ऑफ द नेट ऑब्लिगेशन, जितना भी आपको पे करना है उसका 50% विल बी गारंटेड. तो ये आप याद रखेंगे. ये क्या बता रहा है कि एक्सपोजर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए तो आपने जितने में खरीदा है, दैट शेयर, दैट इक्विटी, दैट डिविडेंड, वो आपने कॉस्ट प्राइस पे लेना है, कितने में खरीदा है. क्रेडिट एक्सपोजर यानी कि आपने लोन देकर एक्सपोजर जो पाया है, वट एवर द लोन हैज बीन गिवन टू यू, सैंक्शन लिमिट और आउटस्टैंडिंग लिमिट, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा. आपने 10 लाख का लोन दिया पर आउटस्टैंडिंग से 6 लाख, विच वन इज हायर, 10 लाख. सो 10 लाख वुड बी द एक्सपोजर दैट यू विल काउंट एज अ बैंक. तो इसी तरह से इन्होंने डिसाइड किया हुआ है. ये कुछ ऐसे क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिन्हें हम कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में नहीं गिन रहे, जैसे कि IFCI, सिडबी, नबार्ड, ये कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो इनमें अगर इन्वेस्टमेंट की गई है देन दीज आर सेफ, तो इन्हें हम एक्सपोजर नहीं मानेंगे. दीज आर गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2026. इसी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी है. स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी है क्या, कैपिटल एडिक्वेसी, राइट, वो भी हम समझेंगे. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इन तीनों को मैंने इसी में ही कंबाइंड कर दिया है, इन तीनों को मैंने इसी में ही कंबाइंड कर दिया है, राइट. हाँ जी, एक और चीज बतानी थी मुझे इसी में ही, क्योंकि मैंने इसमें दोनों को कंबाइन किया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले को भी कंबाइंड किया और कमर्शियल बैंक्स वाले डायरेक्शन को भी कंबाइन किया है. तो यहाँ पर जो एक्विजिशन फाइनेंस वाला लोन था, एक्विजिशन ये वाला, दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन हूम, ऑन द कमर्शियल बैंक एंड नॉट ऑन द स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं दे सकते एक्विजिशन लोन. All other directions are same for the small finance bank except this particular direction of acquisition finance which is applicable on the commercial banks only and not on the small finance bank. ठीक है. अब हम बात करते हैं, नहीं ये हमारी लास्ट डायरेक्शन है, तो इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, कमर्शियल बैंक्स के प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, इसी तरह से स्मॉल फाइनेंस के सेम नॉर्म्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी. तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो मैंने उनको दोनों में एक में मर्ज कर लिया. आफ्टर दिस कमर्शियल बैंक्स की एक डायरेक्शन थी विच इज अंडरटेकिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. तो फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन कौन से में पार्ट ले सकते हैं, दैट वाज अ वी कैन से सिंपल सी डायरेक्शन थी, वो भी मैंने इसी में डाली. तो इससे रिलेटेड, अंडरटेकिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड मैंने यहां पर ही हम कह सकते हैं ऐड कर लिया. सो दैट इज एक्विजिशन फाइनेंस एंड ब्रिजिंग फाइनेंस क्लैरिफाइड, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है दे कैन गिव
एक्विजिशन फाइनेंस एंड ब्रिज फाइनेंस लोन्स। ठीक है, इस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज भी दे सकता है। किसके लिए? प्रमोटर्स स्टेक्स इन न्यू कंपनी के लिए। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स आर जनरली द ओनर, और वी कैन से दे आर द वन हु हैव टू टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स, हु हैव टू बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी। ठीक है, क्योंकि वो प्रमोटर है। ठीक है, तो उनको अगर लोन चाहिए इन ऑर्डर टू एक्वायर दो शेयर्स, तो दैट इज अगेन अलाउड। इसके बाद लेंडिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटीज। यस, लेंडिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटीज इज अगेन वैलिड। बैंक कैन लेंड टू इंडिविजुअल अगेंस्ट द एलिजिबल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, अगेन सब्जेक्ट टू आरबीआई एलटीवी और कोलैटरल रूल्स और मॉनिटरिंग। ठीक है, तो बहुत बेसिक था ये चेंज, सिर्फ इतना ही था इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि एक्विजिशन फाइनेंस और ब्रिज फाइनेंस के लिए लोन दे सकते हैं बैंक, इफ द लोन इज बीइंग गिवन टू द प्रमोटर, देन यस, प्रमोटर को लोन दे सकते हैं। दिस इज द कैच पॉइंट। अब हम बात करते हैं ये वाले दोनों डायरेक्शन के ऊपर, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी। पर क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा लोन दे रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बफर भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ पैसे भी तो साइड पे रखने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर टेकिंग अ टू मच रिस्क, लोन दे रहे हैं। सो व्हाट इज दैट? फर्स्ट इज, बैंक ने क्लैरिफिकेशन दी दैट हाउ दे शुड ट्रीट द इररिकवेबल पेमेंट कमिटमेंट्स। तो ये जो IRC दे रहे हैं बैंक, इसको आप किस तरह से डील करेंगे, राइट? तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत और भी ज्यादा क्लैरिटी दी है। तो की पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीसी विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल गारंटी इवन आफ्टर यू हैव गिवन जस्ट अ कमिटमेंट कि अगर सिचुएशन आएगी तो आई एम गोइंग टू पे दैट मनी, बट स्टिल दे आर सेइंग यू आर गोइंग टू काउंटर दैट, कंसीडर दैट एज अ फाइनेंशियल गारंटी। आप उसे यही मान के चलेंगे कि ये लाइबिलिटी है ही आपके पास, तो यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू अ क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का क्या मतलब होता है? दैट देयर इज सम काइंड ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी, ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटी है, आपने उसे कन्वर्ट कर लिया एज इफ यू हैव गिवन अ लोन। तो इसकी कन्वर्टेबिलिटी कितनी है? 100%। अगर आपने 10 करोड़ का लोन दिया है, तो आई एम कंसिडरिंग दैट एंटायर 10 करोड़ इज बीन गिवन एज अ लोन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो व्हाट इज दिस? क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। सो एंटायर अमाउंट कमिटमेंट इज ट्रीटेड एज एक्सपोजर, इस पूरे को एज अ एक्सपोजर गिना जाएगा। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट अब देख लेते हैं फॉर द CME रूल्स। तो कह रहे रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर द IPC विल बी 125% आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए अब इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा कि 100 करोड़ का क्या दिया? IPC दिया, कमिटमेंट दी आपने। ठीक है, इसमें से कितना रिस्की है, कितना रिस्क है इसका? से इट इज 20%। So how you are going to calculate? Say 100 crore multiplied by 20% multiplied by the risk weight of the risk, 125%. So whatever would be the amount, that will be your risk, right? Effective date कब से है? 1 जुलाई 2026 से। That's it. We are done with the circulars. आज हमारे पास बहुत सारे circulars थे। Again, those were very technical क्योंकि सभी master directions ही थी। However, I have tried it to make it as simple as I can. And कोई भी अगर आपको डाउट हो with regards to this, कोई आपको लगे कि हाँ explanation मुझे समझ में नहीं आई, in that case you can simply ask me in the comment section कि मैम ये समझ में नहीं आई, कि मैम समझ में नहीं आई. I can help you with that. Always you guys are welcome. And yes, we are done with this. And in the next time we are going to take up the April week circulars. Okay. So goodbye everyone. I hope this was a fruitful session for all of you, and goodbye. Take care of yourself. You can take this PDF. There is a, we can say, Google form in the description below. You have to fill that Google form and this direction will be available to you in the